नाइट बोट अमता एक्टिव तौगिगे कराऊंगा वाली से। चलिए क्यारा का सेकेंड राउंड टूर्नामेंट। सब लोग तो आ गया। जो भी देख रहा है शेयर कर दो लिंक। गो रेडी। Kira ai referee oi roi. Oh. चलिए शुरू करते हैं। Your team is banning. कौन सा टीम है मुझे भी नहीं पता है। कीरा का टूर्नामेंट है यही पता है। चलिए देखते हैं। Your team is banning.
रेड टीम ने कुफरा बैन कर दिया और इस साइड में ईव और डिगी बैन किया जा रहा है। आवाज़ कैसे आ रहा है? सबको आवाज़ आ रहा है ना? कोई भी एक कमेंट कर दो। मेरा नाइट बोर्ड भी जिंदा है क्या नहीं पता नहीं। Your team is picking. Always on the way. ओके मिटिल्डा, ब्लू टीम और रेड टीम। जो भी स्ट्रीमिंग दे रहा है चैट कर दो भाई, ठीक से चल रहा है तो। यस ब्रो, ओके। इधर रेड टीम ने करीना ले लिया। तुम लोग पिक देखो, मैं थोड़ा सेटअप करता हूँ। क्या बोला? वीडियो क्वालिटी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। आई नाइट बोर्ड तो तुम लगेगा मान लागते एक तिप्पी तो होगी। ग्रुप तो सेट होगा मी द जिंगलो मी मन जिंगलो। Your team is banning. Your team is banning. Your team is picking. Your team is picking. Your team is picking. वही ब्लू टीम की पिक से थी नगी नहीं रहा। मिथिला से मैच होते मारे ये जो सपोर्ट तेंग और माने। और रेड टीम में टाइग्रेल और दो टैंक लिया जा रहा है इस बार। देखते हैं कौन सा टीम स्ट्रॉन्ग होगा। ब्लू टीम पिक बजाई। ब्लू टीम वही ब्लू टीम ने मिथिला लेके गेम को थोड़ा और ऊपर करा। और इस साइड में 2 टैंक लिया है, पता नहीं कोई स्ट्रेटेजी होगा। मुझे लगता है एक MM के लिए होगा। चलिए किसको देखते हैं। यहाँ पे रिकॉल चल रहा है। ब्लू टीम विन।
यहाँ पे लेन क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या आर्गस हाइपर है? ओह, मैंने कभी देखा नहीं आर्गस हाइपर को, इस बार पहली बार देखते हैं आर्गस कैसे खेलेगा विद हाइपर। और यहाँ पे करीना अकेला बफ ले रहा है, ठीक है। और वही मैं बोल रहा था, एक एमएम के लिए टैंक लिया होगा इन लोगों ने। यहाँ पे एक हुक नहीं हुआ। और इस साइड में मिठलडा क्या कर रही है? ठीक है, यहाँ पे एक फर्स्ट ब्लड होने वाला था पर फ्लिकर से बच गया। इस साइड में आर्गस अपना बफ ले रहा है। चिंगी लेन क्लियर कर रहा है और ऊपर में एक डैमेज पॉप कर रहे हैं। और नीचे में भी चौ। यहाँ पे एक फाइट हो सकता है। मिटल का डैमेज, मैं बोला था अर्ली गेम में मिटल्डा का डैमेज B1 कंपेरेबल बहुत डैमेज है भाई। आर्गस हाइपर आ गया, मेरा नाइट बोर्ड भी आ गया। मैं कमेंट थोड़ा देर के बाद पढ़ूंगा, ठीक है। इसलिए इधर पे आर्गस दोनों बफ ले चुका है। और इस साइड में करीना क्या कर रहा है? करीना क्रैप ले रही है। चौ ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे अभी हाइपर वर्सेस हाइपर होने वाला है। करीना अभी डेंजर पे है। करीना को चौ ने किक मार दिया। फास्ट ब्लड, और ब्लड ले चुके हैं ये लोग। और यहाँ पे मार पाएंगे क्या? ना 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 ना, नहीं मार देंगे। बढ़िया। ब्लू टीम डेंजर है भाई, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। उन लोगों का रोटेशन भी बहुत फास्ट हो रहा है कंपेयर करने से। वो क्या पंच मारा भाई, बढ़िया। और यहाँ पे एक चेंगी कल्टी से, बढ़िया सारी कल्टी से इन लोगों ने किल सिक्योर कर लिया। यहाँ पे रेड टीम थोड़ा वीक हो रहा है भाई। दो टैंक लेकर ये लोग, रोटेशन में भी आदमी कम पड़ रहा है। आर्गस अकेला टर्टल ले लेगा। और साइड में चौ को पकड़ लिया। 2 टैंक ने मिल के दूम करके मार रहे हैं, पर बच जाएगा। हाँ, बच जाएगा। यहाँ पे आर्गस अकेला वो बफ ले रहा है। देखो इन लोग को मारने के लिए अभी तक कोई आदमी ही नहीं है। अभी तक है मियाँ है, पर मियाँ अर्ली गेम में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। ओ, यहाँ पे चेंगी ने बढ़िया से एक अल्टी ले लिया। और यहाँ पे टर्टल भी सिक्योर किया गया। और यहाँ पे इसको मार देगा। बढ़िया आर्गस भाई, गॉड लेवल आर्गस है। हाइपर भी होता है, मुझे आज पता चला भाई। बहुत अच्छा खेला ये लोग खेलते हैं। चलो आर्गस को दबा के देखेंगे। आर्गस इधर मर गया। और यहाँ पे करीना पीछे से आके इन लोग को एम्बुश कर सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे उसको तो मार दिया। ठीक है, कमबैक कर सकते हैं। और थोड़ा टाइम लगेगा वही, क्योंकि इन लोग का मियाँ को भी थोड़ा फॉर्म होना पड़ेगा तब तक। और यहाँ पे चौ भी इन्वेट करने आया है अकेला, बहुत तो ले लेगा। यहाँ पे फ्रैंको का एक अल्टी आने वाला था, पर ज़्यादा कुछ नहीं आया। यहाँ पे मिडिल पे रखता हूँ। यहाँ पे एक करीना और गुशन का फाइट हो सकता है। और यहाँ पे गुशन को अकेला था, मार दिया भाई। ये लोग भी लेट गेम में कुछ कर सकते हैं, पर अर्ली गेम में इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्ली गेम में 2 टैंक। वाह, बढ़िया। आर्गस ने एक अल्टी मारा। और करीना 1 HP में भी है, पर हाँ, आर्गस का अल्टी था, सरप्राइज़ दे दिया। ट्रिपल किल। यहाँ पे एक मेनियक हो सकता है क्या? ना, बच गया। कैसे निकल गया भाई? ओह, इसका पॉसिबिलिटी। रेड टीम हाइपर नेम से OP आई लाइक इट। असम, वही हम लोग का पूरा स्टेट का नाम रख दिया इसने। यहाँ पे एक फाइट हो रहा है। चलो देखते हैं फाइट किसका होगा।
यहाँ पे भी एक आदमी मर गया है। कौन मर गया था? करीना मर गया था, देखा नहीं मैंने, सॉरी। यहाँ पे चेंगी अल्टी मार पाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, पर माशा का शील्ड तो तोड़ दिया। यहाँ पे एक इसका फाइट हो सकता है। मियाँ को मारने के लिए मिठल्डा पूरा फुल अल्टी मारा पर निकल गया। यहाँ पे चौ का पोजीशनिंग देखो, पूरा टाइम पे आया वो, उसने लो करते उसने इसको मार दिया। यहाँ पे फ्रैंको ने टिग्रेल ने अल्टी मारा था पर निकल गया उसका सेकंड एबिलिटी, इसलिए मिठल्डा भाई, मिठल्डा टैंक ओपी है भाई। अभी ज़्यादातर देखता हूँ कि ऊपर का प्लेयर लोग टैंक बोलने से टैंक नहीं लेता है, ये लोग ज़्यादातर सपोर्ट, मिठल्डा जैसा, मिठल्डा नहीं तो एस्टिस, नहीं तो राफेला, ज़्यादातर ऐसा इन लोगों को देखता हूँ। देखो किल लिया जा रहा है इधर, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये लोग इन लोगों का मिड टावर भी, यहाँ पे टिग्रेल ने अल्टी मारा था पर लगा नहीं। मिनियंस अंदर घुस गया है, मिठल्डा भी इन लोगों को निकाल लेगा। यहाँ पे करीना अकेला बफ लेने गया था पर चाऊ ने सिक्योर कर लिया। ये लोग इमोट स्पैम कर रहे हैं। डैमेज तो बढ़िया है भाई। यहाँ पे फ्रेंड को हुक करना चाहता है पर ऐसे सिचुएशन में हुक करना टफ हो जाता है। जब टीम पूरा जीत रही होती है उस समय फ्रैंको का हुक लगता है, पर ऐसा सिचुएशन में ज़्यादातर अल्टी लगेगा पर हुक बहुत कम लगता है। ओ यहाँ पे देखो एक अल्टी मारा था पर देखते हैं, ब्लू टीम ही जीतेगा भाई। ये लोग बहुत फाइट हो गया, अकेला आर्गस अंदर घुस गया, ट्रिपल किल हो गया। यहाँ पे मैनिएक होने वाला था पर नहीं हो पाया, आर्गस इधर मर जाएगा। टावर डैमेज बहुत खाया, यहाँ पे टावर ले सकता है ये लोग पर नहीं लेगा ना। देखो इस मिठल्डा को मारना कितना टफ है इसको करीना से। यहाँ पे एग्जीक्यूट के बिना करीना को गुशेन ने मार दिया। और इस साइड में रेड टीम अभी कुछ नहीं कर पा रहा है भाई। साइड में देखते हैं, चाऊ को एक अल्टी मार दिया, चाऊ इधर मर सकता है। चाऊ को सिक्योर कर ले इन लोगों ने। ये लोग टर्टल ले सकता है, अभी कितना 8 मिनट हो गया ना। ये लोग टैक लोड लेगा लग रहा है, ये लोग टर्टल वर्टल नहीं ले रहे। लॉल, हाँ भाई लॉल। यहाँ पे बढ़िया करीना ने इसको मार दिया। और यहाँ पे इन लोग के पास माशा है, माशा लेट गेम के लिए अच्छा है। लोड वोड अकेला ले लेगी, ये मर जाएगा ना, वो नहीं है। चलो एक आर्गस को लगा के देखते हैं। आर्गस ने सेकेंड एबिलिटी, यहाँ पे करीना छुपा हुआ है। हाँ लेट गेम में ये लोग कुछ कर सकते हैं क्योंकि 2 टैंक के प्रोटेक्ट करके खेल सकता है। मियाँ को खाली डैमेज देना है, खाली आर्गस का अल्टी ख़त्म होने का वेट करना है और उसके बाद तो कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे चाऊ अकेला लोड ले रहे हैं, ठीक है। अभी ये लोग भी आ रहा है यहाँ पे, लोड ये लोग सिक्योर कर लेगा। और यहाँ पे चेंगी ने बैक अल्टी मार के लोड को जल्दी ले लिया। देखो कितना जल्दी ले लिया लोड, ठीक है। पहला था लेवल 1 लोड था ना, इसलिए इतना टाइम था, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनहेंस वाला होने से तो थोड़ा टाइम लगता। यहाँ पे ये दोनों पीछे क्या कर रहे हैं देखते हैं इन लोग को। मिनियंस क्लियर करके कर रहे हैं पर यहाँ पे एक रिकॉल मुझे चाहिए, मुझे लगता है रिकॉल मारने से अच्छा होता। यहाँ पे करीना अकेला, करीना कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ पे मिठे सब लोग इसको पीछा कर रहे हैं। फ्लिकर से भागा पर बच पाएगा क्या? ना, चेंगी ने इसको सिक्योर कर लिया।
और इधर बॉब लेके मुझे लगता है गेम ख़त्म कर सकता है क्या, पता नहीं। इन लोग का डिफेंड करने के लिए खाली मियाँ है। मियाँ लोट मार पाएगा, हाँ मार तो लेगा, पर चेंगी का अल्टी उसी समय में चेंगी का अल्टी आ गया तो टफ हो जाएगा। फ्रैंको ने अल्टी मारा था, वो मियाँ को मार दिया भाई। मुझे लग रहा है ये गेम जीजी है इधर, क्योंकि लोड का अभी तक एचपी ख़त्म नहीं हुआ भाई। हाँ गेम जीजी है। ऐसे करके पहला मैच ब्लू टीम जीत गई। टीम का नाम तो मुझे बोला नहीं है, इसलिए ब्लू टीम रेड टीम बोल के ही समझना पड़ेगा। बढ़िया खेला, दोनों टीम ने अच्छा खेला, पर मुझे ब्लू टीम का अच्छा लगा क्योंकि ब्लू टीम ने मिथिल्ला लिया, मिथिल्ला को एमवीपी मिला। देखो 10.4 मिला, वाह एसिस कितना ज़्यादा भाई, एसिस था भाई। दोनों अच्छा खेला। उधर इस साइड में सब चॉकलेट है सब, खाली टाइग्रल को छोड़ के। देखो प्रो इन लोगों का बिल्ड अच्छा खेला। राजा 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 स्क्वाड के आर्कस हाइपर। यही था भाई पहला मैच। देखते हैं सेकंड मैच में कौन जीतेगा। ठीक है नॉकआउट, हाँ ये तो नॉकआउट है ना, तो दूसरा टीम आएगा लग रहा है आने से। हाँ अब देखते हैं, चलो कमेंट एक बार देख लेता हूँ। ब्लू इजी विन, हाँ भाई ब्लू इजी विन द ओपी किशन सिंह ओपी। हाँ मैंने देखा नहीं भाई किशन कौन था। हाँ अच्छा खेला दोनों टीम ने। थोड़ा टाइम के लिए मेरा प्रोफाइल देख लो। ये लोग सेकेंड मैच के लिए किसको बुलाना पड़ेगा, वो बंदा ऑनलाइन दिख नहीं रहा है भाई। ठीक है सेकेंड मैच के लिए भी इन लोग को पूछ लूँगा मैं, तब तक थोड़ा शील्ड मोड में रहो। But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? If you're gonna leave, I'ma let you go.
7 da. Koi kuyen na tulog sa labi mo. Ay kung set up kayo na sila tong video. Tay tazo rin na. Dum 640 to ay how guys. 645 na kaya. Yeah.
up intensity again. Poor thing. I was sweating. Again, Philippines. Also respect towards Blacklist, because this is the draft that defeated them in the final game of the grand finals back at home for the Philippines, so they are quite traumatized by that pick, and they will ban it straight away here in the second banning phase as EVO's Legends will take to their final ban. What will it be? Perhaps the Lancelot, or do you think it will be yes? The Lancelot ban coming in from EVO's Legends, 2 Assassins, 2 Mages, and 1 Chalk Mamba ban right now for Execration. Kufra is still open. Same thing from EVO's Legends. So if Execration doesn't ban this Kufra, we might see LJ pick it up, pick it away from Chalk Mamba. I absolutely see that option being a possibility here, Momochan. But yeah, Execration with their last ban, they might ban that Kufra or even another... Rafaela? Rafaela? Oh yeah, I think that is also an option. That is an option, but I don't think the Rafaela will be picked up, certainly because they already banned the Aldous. Rafaela and Estes, I think, are just too much? No, not damage. No, there's no damage. They need to pick up the Bruno as well, and it can be easily countered by Execration. That's what I think, right? Right now, I want to see with the Paquito, all right, with this Harith, they want a team fight. What is the best team fight? The man, the myth, the legend, LJ. Okay, will we see the Kufra from LJ here, or perhaps will he let it go and give it to the new generation of Kufra, the Chalk God, the Chalk Mamba? The thing is, I think if EVOS takes that Kufra, Execration will gladly take that Granger here. But securing that Brody first. Brody, okay. What do you think about the Brody pick? Because now they already have a late game damage dealer. They already have this Harith. With this Brody, they kind of lack this early game pressure. Brody doesn't really do any damage in the first few minutes of the game. He needs to start stacking, and that means they will have to trade a few turtles, give it back to Execration, whereas Execration right now, they have the chance to pick up the Granger with the help of the Matilda, can create so much room in the early game, especially if they go for a Kufra. It's gonna be huge. Blue, I gotta pick with Execration. Execration 1 now. Momo, give me your thoughts on the draft. Which one do you like? I really like the composition coming from Execration here. Whoa! With a combo from Cloud and also Veil. So I will go for Execration for the game number 1. 2-0 Execration. And for me, I will actually pick EVO's Legends for this one. I think they have a solid draft in the early game. They have that Paquito to carry them through that early game, get some damage onto that Veil, and in the late game they also have some insurance. But let's stop talking, let's stop predicting. Ladies and gentlemen, the final match of the day. Let's get it. Execration versus EVO's Legends here in the upper brackets. Yep, Chaknu with his Matilda. Meanwhile, Kalura will stay in the top lane here with his Lunox. Meanwhile, Versik is going to, maybe try to scale a lot of items, trying to make a lot of space as well. Meanwhile, LJ plays so aggressive. Yeah, already zoning Kill VJ away from his own purple buff as he is forced to go to that orange buff right now. LJ with this Paquito, we've seen even Leo Murphy play this kind of style with that Paquito. Just go inside to the enemy jungle, disturb the enemy jungle, like we see with the Jawhead and also with the 2 support meta. Yep. One more chance. E2 Max. This is what makes Execration look so strong though. They have the early composition from this Matilda and also this Veil. Yeah, and now already LJ pressuring E2 Max, trying to pressure Kill VJ as well, but unfortunately Kill VJ will be able to secure that orange buff with the help of Retribution, and now Chaknu zoning Evos away. Evos has to be careful here because in the early game, Veil does so much damage if they just do not respect the damage, do not respect the utilities from this Veil. Not only does he do damage, but also a knock-up ability from the side of Execration. Actually, it depends on how Etsumax will play this Veil, because he can choose between it's gonna be a lot of damage coming from this Veil, or maybe it's gonna be another CC that will help his teammate for the team fight. Yeah, already a lot of damage, but right now, give me your thoughts onto this game, Goni. Tell me what's happening, tell me what the teams are strategizing. I think personally here, LJ plays smartly here. He wants to give pressure, but of course he does not want to
be offside or overcommit things that isn't well calculated. But I see both junglers farmed up well. Oh, stun up coming in from Versik, zoning Renzio away. Has to use the torn apart memory actually to zone him away, as Chaknu will be able to chunk a little bit of Evo's anti-mage's health right there. But again, guys, this is a very, very intense matchup. Both teams are respecting each other so much right now, as they do not force onto any of the objectives. They do not force any team fights right now, playing it very, very slow. Chaknu now dealing damage onto Rexy, but Versik will be able to pick up that gold buff and the lead as well. Now, look at that. LJ in the backside going to be able to go onto Versik. No, not first. Chaknu. Chaknu is going to get taken down. First blood by Evos. Anti-Mage gets a kill onto Kill VJ. And this is not what Execration wants to do. Brody now trying to get a kill. The healing comes in. Renzio trying to run away, but look at the damage coming in. Look at the utility coming in. It will be E2max trying to save him as Anti-Mage joins back in. That is 2 kills picked up by Evos Legends. Oh my god. Execration, they lose 3 members just now with the team fight that's happening with Evos Legend in the river. Wow, That's not looking really good for Execration. Yeah, I think for now, Execration needs to hold off team fights. They do not. They want to play passive. I mean, with Claude, they want to enter the late game as farmed up as. And look at this, Anti-Mage doing Anti-Mage things right now as he goes in onto 2 members. Renzio will be able to prick him back, but Anti-Mage goes back in. He actually goes on to kill BJ. A kill picked up by Evos, and now they're going onto Renzio. Anti-Mage will be traded back. A2max will get a kill. They're looking for more. Percy comes in with a stun. He's going to use the torn apart memory to finish Chaknu off, and that is a 2-for-1 trade. Wow, Evos Legend now they are looking really dominant in the early game with the good follow that always coming from this team. Very, very good follow-up right there. Gani, any thoughts? Yeah, I think, like I said, Execration needs to hold off fights, guys. I mean, Evos, they're willing to take fights right here, right now, but Claude is not farmed up. Yeah, the stun comes in, and Gani Renzio is a goner. It's going to be Versik picking up another kill on the board. 2-0. Wow. Yeah. Well, then again, here we can see Evos Legends really taking the control of the map. Top side though, and now Anti-Mage goes for a kill onto E2. Max Clover will be traded back though as Chaknu gets the kill there in the top side. Now Anti-Mage rotating to that top side, trying to cover for his fallen brother. But Versik is also trading that bottom side. He will be able to get that turret right now, and Anti-Mage will be able to defend the top side, Gani. Yeah, exactly. The Claude here needs to farm like Dean is his space, and gets his item, and basically then, not until then, Execration could win a team fight, basically. Yeah, and Execration already playing towards this top side, knowing that this Herith isn't as strong as Kelra, as Lunox right now. So Anti-Mage has to rotate, but they're switching sides on the map. They're changing their priorities on the map, as Evos Legends are completely controlling the bot side, but Execration are completely controlling the top side. You're absolutely right, guys. And right now, we can see but look at that. Summon Force being used, now popping onto E2max. The Strictly Eagle connects onto Clover, but there is still healing right there as LJ follows it up all the way to the back side. Now Chaknu gets taken very low, but there will be no kills on the board for both teams. A lot of resources spent by Evos Legends trying to make that play though. So Execration, they still have a lead in terms of abilities as of this moment, Gani. Exactly. More control of Evos, more objectives. 1 turret and an extra turtle here for Evos Legends. Meanwhile, Execration, they are still struggling because they lost control of the map right now, but then again, we will see towards the late game here, Execration still have a chance. Yeah, but Versik already 1 level ahead right now as he just chunks towards this turret. He will actually zone 2 members away from his turret. Clover will be able to secure that bottom side turret, and now Evo's playing the long game, playing just for the rotations, for the pressure on the lane as well. Yes, and all the zoning strategy that Evos Legend doing right now works really perfectly for them. Yeah, Anti-Mage. And LJ, he just keep giving a lot of damage as well. That is so much damage. That You're right, but Kill VJ, remember guys, he has been farming up a notch here. He has been scaling after the second death. He has been focused on farming. So right now, still a level. They're still on the same level. And from the items, Gani, tell me what you can see. Exactly. Claude is still trying to build up on that VHS. Meanwhile, Brody, is already heading towards that BOD right here. Yeah, and again, Evos Legends just trying to get objectives on the board, trying to clear the waves as fast as possible. And for the side of Execration, they are more reacting than making the proactive moves. As Clover now joins in the fight. He actually goes in to zone the enemy team, and they will be able to get a turret now. Real to the order being used on that
Kelra right now, as Versik will not be able to deal some damage, but But Chapnu is a LJ target. LJ trying to zone them away, and that was beautiful from the side of Evo's Legends, just taking turrets one by one, zoning them away, and no turrets have fallen from the side of Evo's just yet. Yep, 4K the gold differences in the hand of EVO's Legion Execration. Now they are trying to find a momentum actually how to come back. They cannot, maybe they can give a lot of time as well for KLVJ to just keep snowballing or maybe trying to, you know, Oh, but a Turnip get a memory lot of comes in and balance LJ here. goes in for the flank. He'll be able to get one kill. That's a killing spree picked up by Versik. They're going in, but look at the Veil. He's trying to do damage, but it won't be enough as Evo's Legends will just be able to walk out of that one. Going on to Kelra, forcing him to use the brilliance of the order once again. Evos are controlling the space of the game as they push every single lane. Anti-Mage goes in with the Bravest Fighter to the backside. LJ? Going to be able to get an A2 max stunned up. Now but Clover Clover! uses the Bond Force to the backside as well. Going to be able to almost get him taken down. The stun comes in to kill BJ. He's taken very low. Chapnu goes in for the Circling Eagle, and this is the combination from Kelra. The shutdown picked up by Versik. No, the shutdown picked up by Kelra. A double kill, and Evo's Legends are forced to retreat away. Yep, we've seen the good Circling Eagle actually being popped up by Chakme just now. Versik.
until I walk awake. Scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, I'm gonna give it a shot.